my take on this Union Budget 2022 is that there are many fundamentally growth-oriented programs in this budget. What has happened is most of the governments earlier, or the ruling parties who had presented the budget, had a populist budget where it was like firefighting to give something and make people happy. They had no, in earlier budgets, we did not see such long-term vision for the development of the country, growth of the country, growth of the infrastructure, growth of in such a way that in coming years we will become more self-sufficient. Our growth rate will be stable. Not only stable, India is one economy which is growing now, and in the world, we are at this point of time after the pandemic or during the pandemic now also, we have handled the situation so well that we are the fastest growing economy in the world now. This budget doesn't have very pleasing programs or giveaways to the middle class or lower class or anybody for that matter. It's an infrastructure-oriented budget where we are talking about self-sufficiency, Gati Shakti. There should be speed, and also we should be empowered as a nation. Not only as a developing nation, but we need to strive to become a developed nation, self-sufficient nation. So this budget is all about making our basic structure strong, our infrastructure. The lot of capital expenditure is being made to see the growth rate enhanced in the next 3 years. Now, with this background, you would be amazed that there is one independent chapter in the budget on MSME. India has realized of late that till we make our micro and small and medium scale industries grow on a sound footing, we cannot become self-sufficient, we cannot grow. Only capital intensive big industries will not help us. It will also generate employment for others. There is a lot of encouragement and inspiration for small scale and medium scale industries where people are going to do startups, become self-sufficient. New enterprises and new entrepreneurs should come on the arena of development in India. So in this prospect, when we see that lot of emphasis is on the MSME sector. There's a full chapter, and economy is also opening up in the sense that ease of business has been further emphasized, that we have repealed almost 1486 rules and regulations and laws which had become totally redundant, and they were creating more hindrances than growth. Such laws are repealed. Many major changes have been done so that ease of business is further enhanced. Now, there are some very unique features in this budget. One is, let's take the word digital. We are talking about, in this particular budget, we are talking about a digital university, which anybody while working or non-working can join a university from wherever they are, and the medium for education would be regional languages. Education would be imparted in the regional language, so that anybody who is keen to learn something, say a Telugu person can take classes in Telugu language, a Tamilian can do that in Tamil, North Indian can do it in Hindi. So all regional languages classes would be available in the digital university, which is the first of its kind. India is coming up with a digital university. We are also talking about digital rupee. RBI is working on it, and very soon we will join the virtual world of economy like bitcoins and
we are coming out with a digital rupee. You can transact in digital currency, as well as you can convert that currency into hard cash also. So that kind of scheme government is introducing in this budget. We are also we are talking about non-fungible assets, which are in the virtual world. First time India has given recognition to virtual currency, Bitcoins and all its likes, where if you create an asset and earn an income on that, it will be taxed at the rate of flat 30%. Even when you transfer that virtual asset to somebody as a gift, the receiver will have to pay tax on that. These are the very latest developments in the budget, which was not there. Till recently, we had not recognized the Bitcoins, the virtual currency, and we were not sure whether till the government policy would announce that whether it will be legal or illegal. Now it is legal. The only thing, if you earn on that, you will have to pay taxes at a flat rate of 30%. Even if you gift your non-fungible asset to somebody, the virtual asset, it will be taken as a gift, and the receiver who receives the gift, the donee, will have to pay taxes at the 30%. So these are the major changes. So we are trying to reach the world and become at par. This is a very unique feature of the budget. We are introducing some 400 new trains to connect India. You know, the interconnectivity of cities and places and states has been really emphasized this year. Within 3 years, we will have 400 new trains running, connecting India in a big way. These are called Vande Bharat trains. So these are the new developments. Then in the infrastructure for increasing the national highway to a great extent, a major portion of budget has gone there also. We are also looking up to give extra incentives and budgetary provisions to northeastern states so that they become part of the mainstream. Like recently, you must have read that Manipur has been connected by train after some 75 years. There was no train service in Manipur. So we are looking up at a new India, which will be self-sufficient and in a way, since last so many years, we have been trying to reduce our import duties so the trade deficit can be controlled. The trade deficit projected something, but it would be about 6.9%. Trade deficit can only be reduced when we become self-sufficient. We don't pay so much of import duties. Over the years, in last few years, import duty has gone down, and it will go down further when we will be becoming self-sufficient in the defense sector. First time in India, we have introduced a public partnership project even in the defense sector. Earlier, no private person could make defense equipments and armaments in the private sector. Now, first time India has said that, okay, we will allow our big industries to make defense equipment so that we can save on import duty and for our own people. In the whole process, we will be saving lot of money on the import duty, and therefore we'll be able to reduce our trade deficit. The budget deficit has not been in control because of the pandemic, but we are not doing very badly. Keeping the last 2 years in mind, we have not fared very poorly in the sense that we were able to sustain ourselves because we were able to make our own vaccines. And in a very short duration, major part of India is vaccinated. If we had to buy those vaccines,
we had to really cater for that. So we were able to do that by making our own vaccines. We were not deprived of the vaccines like many other poor nations who are still waiting to be vaccinated because they don't have their own vaccines. So the whole budget is not a populist budget, it is a growth budget or based on sound fundamentals where we will create our own infrastructure in such a way that we are not dependent on other countries. If India becomes self-sufficient in many ways, then we will not be able to we will not be taking loans, we will not be paying heavy interest, we will not be paying heavy import duties. And the second thrust is on export-oriented projects where India will earn more money through exports. So this is the balance, to reduce import and to increase exports. We can only export things when we make our own manufacturing units strong. You must have recently seen only few days ago, India has announced that we have not only made our own drones. Our own drones were used recently in the beat and retreat function, about 1,000 drones made in India. India is the fourth country in the world after US, Russia, and China. India is the fourth country which now makes its own drones. And now we have also said that nobody will be able to import drones so that we will be safe and India will produce its own drones. So these are the sectors where India is trying to become self-sufficient so that our, we not only stop paying so much of import duty, we create jobs for our people. Our IIT Delhi students have uh, generated the research for making our own drones. So I'm just giving an example of drones. Now the drones can also, it is legal to, very soon, people can go to office by drone, saving time. Drones are already being used for farmers to, if we can put, like say tea industry, if the drones are used, there are different types of concentration of sprays for the plantation, which takes so much of time manually done. So if it is done by drone, it will be more efficient. The percentage of and concentration of the spray will be scientifically done so that the growth, the plantation and the growth of tea industry can be increased. So we are trying to use the latest gadgets and using artificial intelligence for agriculture sector, where a farmer has an app, he goes to a particular pole which is enabled with artificial intelligence. He can put a question there and he on the pole, he will get his answer. So these are the techniques which we are trying to, we have to make a quantum jump in our development process. We have been very slow in growing in last 75 years. We are rising now. And it will only happen when each sector, agriculture is only growing at the rate of 3.9%, which is much below the country's GDP. So if the whole country, we are also trying to see that artificial intelligence, the weather forecast. We have satellites. People feel that why this satellite, this, that. Now the accurate prediction of weather is so good. It is so correct that National Disaster Authority can preempt all big major climatic events
Hello? Hello, am I audible? Yes, ma'am. What's going wrong? I don't know. Anyway, so I was saying that this year the budget is not to gain votes or to please people. It is to grow the country, the growth of the country, and on sound principles, so that in next 2-3 years time, India can become a much more developed country. So that the thirst is not on. As far as taxation is concerned, we have not made any major changes, because we want to give a message to public that there will be no unpredictable, abrupt amendments so that you suffer. Now you can plan for next 2-3 years that this is the tax structure, this is the policy. So accordingly, better planning and better tax regime can bring. So no major changes in the slabs for tax rates are concerned. It's not done. 2-3 things have been brought. I told you that digital assets, virtual assets will be taxed now at the rate of 30%. Then now the trust of the government is on people. Suppose you make a mistake in your ITR, in your return, you can suo moto revise your return in next 2 years. Of course, by paying, if you have made a mistake and you have realized the mistake, you can revise your return and pay additional tax, whatever is your dues, and make that correction. You will not be, the department will not hound you for that. You have the liberty to, once you realize that you have short paid or there's some changes, you can do it in next 2 years and pay your additional taxes on that. So this is, reposing the trust factor in people, that you realize that you have underpaid or you have forgotten to pay some taxes on a particular head, or it is wrongly calculated. You have the authority to do that. Otherwise, there is no slab changes. Only the major changes that virtual assets will be taxed. There is a capex on long-term capital gain. The surcharge will not be more than 15%. The cooperative bank structure has been changed so that they pay taxes at the rate of at a lower rate. So these are the major changes in the budget. And if we see defense sector, there's a major change. There's a paradigm shift. Earlier, the defense was whatever we were mostly importing equipments, guns, everything. Now India is trying to make their own, and the first time they have given that there can be a public partnership (PP) scheme, which was not there at all. When you see our last budget also had a major shift in the health sector because of the pandemic. Most of our budget allocation was spent in getting people vaccinated. A lot of emphasis is now on budget. This year, for the first time, we have made a policy about national mental health. During the pandemic, we have realized that people also suffer with mental ailments. There's depression, there are number of suicides have increased, people are facing mental issues. First time we have recognized that mental health is also very important. So there's a national mental health scheme, and we have made policies according to that, so that then mental health also becomes an important aspect of health. First time we have recognized that mental health also has to be considered as a field where people are suffering. We thought, we never paid any emphasis on mental health, though it is always there. Every third person may have some minor depression, which the society and the country had never recognized. Now we are paying attention that at least the mental health of the person also is very important. This is also a new major shift in the budget. Before this budget, we have never talked about national mental health schemes or the policies. So this is also a very major change.
Then we are we have put more money to link our interlinking of rivers. 15 new rivers will be interlinked with each other so that the excess water of one river can be utilized in other parts. So we can control natural disasters like flood, etc. And also where there is a scarcity of water, equidistribution of water can happen. So that also is a very important thing. National highway projects have been not only expedited, major thrust has been put so that the whole nation is interconnected through national highways. So these are, when I see the budget, I see that we are trying to give a stable, predictable tax regime so that people do not have to worry about that every year this will change, that will change, and then you'll have to pre-plan how to avoid your tax or how to plan your tax. This is a policy which is inconsistent, that this will be there in next few years so that you don't have to plan for your taxation. You have to see that how you can participate in the growth of nation. So this is the crux of the matter, where we are trying to, the whole emphasis is not on giving small goodies to the middle class or lower class or things like that. We are trying to focus on the development of the nation, growth of the nation. So this is the crux of the matter, where we are trying to fix things which, till the nation grows in infrastructure, till we become self-sufficient in many matters. We don't have to buy war equipments and major defense deals may not be needed for India anymore. Major things we can produce ourselves. We are working on our satellite systems so that we can give an accurate prediction to our farmers and people who are dependent on climate, so they know how to handle it. Artificial intelligence is being introduced to the farmers so that they can plan better. Then one major change is also the agriculture universities have been asked to revise their syllabus and bring in zero budget production, more organic, how we can grow more organic food with zero budgeting. This has been, the universities which are dealing with agriculture universities have been asked to accommodate and revise their syllabus so that new techniques and how to do it is also included in their college university curriculum, which is a very good thing, because mostly our education system before the introduction of new education policy last year had become obsolete. We have to change our syllabus. All education should lead us to a better life. How to lead a good life, how to lead a healthy life is very important. So these changes have been brought in the agriculture university sector also, so that they teach how to make organic agriculture, so that people get natural food with no excess of fertilizers. So all these are the sectors where so much work has been done so that we improve the quality of life. I said ease of business is a very important aspect since this government, since last 4 years, the finance minister has been putting focus on that we should be able to become self-sufficient. Not only self-sufficient, we should see that we follow the ecological system in such a way that we don't do further harm to the environment. Accurate prediction of weather will help the farmers in a big way. So even the price structure of the government procurement also has been fixed so that but our farmers get a better deal. The farmers, you must have realized and you must have read also, a lot of farmers were committing suicide earlier. That has to go down. It will only go down when they have a better living standards. And after putting so much effort, if they are so dependent on the climate and so dependent on other factors,
then they will not grow. And if they don't grow, India being an agrarian society, our GDP will never grow at the rate which we want us to grow. So these are the factors which I thought that this year's budget has a paradigm shift, in the sense that we are totally focused on the growth and self-sufficiency of this country. So new trains, new national highways, addition to whatever we have already done, we are putting more money so that the whole nation can be interconnected. There's a special focus in last 2-3 budgets. We have seen focus has and special grants have been given to northeastern states. This year we have given some more extra grants, which we were giving. Some more extra fund has been given so that they can grow faster and become the part of the mainstream of India. They should not be left behind. They should not feel neglected. They are feeling much better and they are growing at a faster rate, because we cannot neglect our northeastern states. Even you will be surprised that the bordering states with China, bordering villages with China, has also been taken care of, so that they also grow and they are happy and their growth rate is good, so that they are not lured by China to be, to go on that side. So that also is being taken care of. We have increased our defense budget, we have increased our health budget, we have increased. Our major focus is on infrastructure development and self-sufficiency. So ease of business will also give the entrepreneurs to be inspired to do new things. Like very fast, India has made its own drones. It has also come out with a new masks. The vaccine has been we have done our own vaccine system. So all this is basically to encourage people in India to have a scientific brain and use it and do research. So this is a research oriented budget, where how we can improve our things. So now I just, Vimla, I want my audience to, if they have any particular question or they want me to cover any particular aspect, meanwhile I will keep talking, but you just read if they have any questions so that I can focus on that also, right? Question hai kuch? देखो questions हो chat में तो मुझे बताओ, because I can't see. No, ma'am. Questions अभी raise नहीं. Questions नहीं है? No, ma'am. अच्छा, ठीक है. So let us come back to other features which are equally important. These were the, digital rupee, digital university, digital assets. First time India is talking about these things. So it is very important that we understand how we are going to, what will be how RBI will structure this and make a virtual currency where you can transact in digital rupee. And as and when you want to convert that digital rupee in a physical currency, hard currency, that also can be done. We are working on that. We are also working on other aspects, like I have covered agriculture, I have covered MSME sector, which has a full chapter in this budget. So much emphasis has been laid on that. Then taxation structure, I have already told you that no major changes, only we are talking about how to tax the virtual assets and what will be the rate of tax. This is the only chapter, and where suppose in a case where a search operation has happened, a search and seizure operation has taken place, will they be able to revise the return? No. In that case, you have to, once you are caught, you will have to pay your taxes accordingly. That benefit will not go to such cases where searches have already taken place, that you can revise your 2 years back 2 years return. That is not possible. So digital university will of course bring education to all people who are partly employed or who want to do value addition in their education system, enhance their educational system
while working. So all these things have been very new to the budget. Before the budget on 1st February, we come out with an economic survey report, which is also a very important aspect, where we have said that our growth rate will be 8.4%, which is which doesn't match with the world predictions, but nevertheless it is quite close to that, and we will strive to achieve that. The economic survey report is equally important. The people who are aspiring to appear for civil services should not only read the union budget, they should also read the economic survey report, which is laid on the table of the parliament. You must have, I would suggest that one must also listen to Sansad TV, Parliament proceedings, so that you learn so much about what has been discussed and how it is being done. A budget discussion is very important part of it. I must talk about women and child then. How to improve the quality of life of women and children. So the Anganwadi scheme has also been enhanced. The amount of money which we were spending for each Anganwadi worker has also been increased, so that the basic amenities are also provided to women and children, so that the quality of life of these two very important sectors of the Indian human resource also improves. Anganwadi has been uplifted in the sense that they will be able to, they are complete, all the Anganwadi workers are trained, and they will be trained further to become so capable that they can lead their area by educating, by providing good services to women and children. I must also talk about how to bring medical health to the women and children of rural areas. So these Anganwadis have been also put, they are, the value of an Anganwadi worker has increased. They will be constantly trained. So if they are trained better, they will be able to provide basic education, basic hygiene. There is one more very important aspect to this budget, is that there should be nal ka pani in each home of India. In our very remote rural areas, women have to go to very remote, they have to really walk and fetch water, because there is no water in their house. Water is not easily available. We don't realize, because hum nal kholte hain, hamare paas RO hai, sabse pani aata hai, and we get water, but they don't get it easily. Usko karne ke liye, now this year, the first is every house should have a tap, and the water should be easily available to each house. This may seem to be a very easy small thing, that pani to ye kaun sa government ka scheme hai. Pehle toilet ke upar focus tha, so now each house has a toilet. Now each house will also have a tap, so that they get water easily. Gas के ऊपर था कि गैस सिलेंडर अवेलेबल करा दो, ताकि the life of the women in the house should be, उनकी लाइफ सिंपल हो, उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए. तो ये पानी भी अभी ये बहुत बड़ा स्कीम है गवर्नमेंट का, so that they get enough water from the tap in the house. They don't have to walk a mile and find water. So these are the aspects in the rural area. We are really focusing on the rural poor, how to improve their life. That is there. And Anganwadi workers will be trained, so that they become more equipped to handle their sector. They mostly deal with women and children. So these were some aspects which I wanted to cover. Any other part the participants want me to talk about? Vimla, are you there? कोई क्वेश्चन है तो मैं वो भी 5-10 मिनट में कवर करूंगी. बोलो. मैम अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है. नो मैम. ओके.
तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो पूछो। यस मैम, लाइक ये यूनियन जो बजट है, ये हमारे जो आम जनता उसके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा? आम जनता के ऊपर तो सारा फोकस है। पानी, आम जनता किसको मानती हो? जिसके घर में कभी पानी आया ही नहीं, उसको 10-10 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना होता है। तो आपके घर में एक नल लगा दिया जाएगा, उसमें पानी आएगा, आने जाने का जो टाइम और एनर्जी वेस्ट होता था वो तो नहीं होगा ना। जिसके घर में पानी नहीं है उससे पूछो कि उसके लिए क्या है इस बजट में। आम जनता तो आप और हम आम जनता नहीं है। जिसके पास पानी नहीं है, जिसके पास बिजली नहीं है, जिसके पास गैस नहीं है, जिसके घर में टॉयलेट नहीं है, ये 4 चीजें गवर्नमेंट दे रही है। और साथ में जो ये घर बनाने का था, प्राइम मिनिस्टर का जो एक आवास योजना है, उसको भी और बढ़ावा दिया गया ताकि जल्दी से जल्दी सबके पास रहने का घर। तो सिर्फ आम ही आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि वो इम्प्रूव हो जाए, उसकी लाइफ इम्प्रूव हो जाए, खास करके औरतों की, जिनके पास पानी उनको लाना है, गैस लकड़ी से खाना उनको बनाना है, टॉयलेट जाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। ये सारी चीजें तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने मुहैया की है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री में ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं जो आपको और हमें प्राप्त है, हमें पता नहीं चलता। स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है, नल खोलते हैं, पानी आ जाता है, गैस जलाते हैं, बर्नर जल जाता है। ये सारी चीजें सबको उपलब्ध नहीं है। वी आर प्रिविलेज्ड पीपल, वी आर नॉट आर्म पीपल, है ना। हम आम आदमी नहीं है। तो आम आदमी को घर घर नल मतलब हर घर में तुम्हें 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल के जाकर पानी भर के नहीं लाना पड़ेगा। ये मेजर चेंज लाएगा, ये रिवोल्यूशन है कि हमारी पॉपुलेशन की 50% पॉपुलेशन को पीने का पानी नहीं है घर में। मैम एक और क्वेश्चन था जो ये अभी लाइक अभी न्यूज आई हुई है जो टैक्सेस बढ़ रही है कॉइन्स पे, जो बिटकॉइन्स हो, जो करेंसीज है, ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। बता दें, पहले इंडिया में इसके ऊपर कोई भी कानून बना ही नहीं था। डिस्कशंस वगैरह हो रहे थे, मगर हमारे कंट्री में उसको लीगल परमिशन नहीं मिली थी। हमें ये परमिशन ही नहीं था कि हम उसमें डील कर रहे हैं। और बहुत सारे यंगस्टर्स बिटकॉइंस में डील कर रहे हैं, एनएफटी बना रहे हैं, आर्टिस्ट बना रहे हैं, लोग अपने ऑडियो का बना रहे हैं, वीडियो का बना रहे हैं, किसका एनएफटी बनाकर सेल कर रहे हैं और उसको मार्केट में डील कर रहे हैं। या बिटकॉइन ही आज खरीदते हैं, कल बढ़ जाता है, जैसे शेयर मार्केट है वैसे एक उसका भी मार्केट है। तो ये भी नहीं पता था कि हम लोग लीगली करेक्ट हैं कि नहीं। तो भारत सरकार ने उसको स्वीकृति दे दी कि हाँ, हम खुद अपना डिजिटल रूपी बनाएंगे। वो भी एक तरह का बिटकॉइन ही है। तो डिजिटल रूपी है मतलब तुम्हारा भी एक वर्चुअल करेंसी बन गया, ठीक है ना। तो एक अपनी वर्चुअल करेंसी आ गई, और हम जब अपनी वर्चुअल करेंसी है तो हम पूरे वर्ल्ड से पीछे नहीं रहेंगे। हमारी इंडिया की भी अपनी एक वर्चुअल करेंसी बन गई। दूसरा, अगर आपने बिटकॉइन में उसमें डील करके, जैसे कमोडिटी का स्टॉक एक्सचेंज है वैसे, या शेयर मार्केट है, ऐसे करके लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, तो उस पर वो इनकम भी तो टैक्स होनी चाहिए। तो रेट लगा दिया कि 30% की रेट पे उससे जो आपको प्रॉफिट होगा उससे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये है उसका। थैंक यू मैम। और पूछो। चलो, तुम्हारे क्वेश्चंस पूछने से बहुत लोगों का जो भी सुनेंगे बाद में ऑडियो ये देखेंगे वीडियो, तो उनको इससे कुछ वो मिलेगा। अगर आपने अपना एक एनएफटी बनाया है, नॉन फंजिबल एसेट बनाया है, मान लो एक पेंटिंग का ही बनाया, वो आजकल बहुत महंगी बिकती है, आपने उसको सेल किया, उसमें भी आपको जो प्रॉफिट होगा, आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो भी है, उसके बाद जो प्रॉफिट आया वो भी 30% के फ्लैट रेट से टैक्स होगा, विच इज हाई। पर पहली बार है तो अभी गवर्नमेंट उसको हो सकता है आगे आने वाले सालों में थोड़ा कम भी कर दे, पर हमने पहली बार उसको लीगल कर दिया है। उसका टैक्स स्ट्रक्चर बता दिया है कि इसकी टैक्सेशन कैसी होगी। मान लीजिए आपके पास एक एनएफटी और वो आप मुझे गिफ्ट कर देती हैं, तो जो रिसीवर है, मैंने गिफ्ट लिया आपसे, तो मुझे उस पर जो बेनिफिट आई उस पर हमें 30% से टैक्स देना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू ही मेरे लिए गिफ्ट है। आपने मुझे 100 रुपए का एनएफटी दिया, तो मेरे पास तो 100 रुपए आए ना, उस पर 30% मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो 30 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को जाए। तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, क्योंकि यंग जनरेशन, बहुत सारे लोग, कम से कम 25% पॉपुलेशन जो पढ़ी लिखी है वो बिटकॉइंस में डील कर ही रही है। यस मैम।
ये बहुत नया है और मगर अब लीगली करेक्ट है। आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हो, बिटकॉइंस में डील कर रहे हो तो लीगल हो गया और टैक्स स्ट्रक्चर भी उसका समझा दिया गया। आप करो, उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स। और कुछ लाइक अनएम्प्लॉयमेंट का भी जो चीज चल रही है। हाँ, तो इसके अनएम्प्लॉयमेंट देखो, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं ना, इतना बड़ा देश है कि हम सबको किस तरह से, जब दो चीजें हैं, एक आपने अपना कोई स्वरोजगार शुरू किया या किसी मीडियम या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने लगे, तो जब मीडियम और स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्री में लोग ग्रोथ हो रहा है, वो लोगों, जैसे मान लो कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं मीडियम स्केल पे इंडस्ट्री में या बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, तो उस काम में हम 10 लोगों को एम्प्लॉय तो करेंगे ना। यस मैम। तो इनडायरेक्टली वहां से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये एक तो ये हो गया। दूसरा, आप अपना कोई स्टार्टअप करते हो तो लोन्स बहुत इजी टर्म्स पे मिल रहा है। उसके लिए जो आपको स्किल्स चाहिए, आपको लोन चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस चाहिए, वो सब इतने बहुत सारे कानून थे, बहुत पेपर वर्क था, वो सब बहुत कम कर दिया गया ड्रेस्टिकली। तो हर आदमी, खास करके मैंने देखा औरतों को इस पेंडेमिक में, घर घर से लोग अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि जिसको बहुत एग्जॉटिक केक्स बनाने आते हैं, ये आता है, तो वो लोग घर से अपनी कन्फेक्शनरी चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे चला रहे हैं। बता, आप उनको एक मैसेज कर दो कि मुझे ये 500 रुपीज का एक केक चाहिए और ऐसा ऐसा मुझे चॉकलेट केक चाहिए। तो अब औरतों को इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। ऐसा बहुत सारा हो गया लोगों को कि अब छोटे छोटे, ये स्मॉल स्केल हो गया ना, लघु उद्योग हो गया ना एक तरीके से। आपके 100 क्लाइंट्स बन गए, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, उसी में आप ऑर्डर करिए, आपकी होम डिलीवरी हो रही है। तो होम डिलीवरी करने के लिए एक लड़के को काम मिल गया, है ना। उसके बाद जिसने घर से औरतें पैसे कमा पा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे ऐसी औरतें हैं जो फुल टाइम काम नहीं कर सकती, तो वर्क फ्रॉम होम उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, होम टिफिन का सिस्टम है, ये सारी औरतें चला रही है कि हम ही लोग को हुआ था, पूरा लॉकडाउन हो गया, खाना नहीं बना पा रहे, तो होम टिफिन मंगा रहे हैं। उससे क्या हुआ, ये भी एक लघु उद्योगी है, जिसमें वो बोलते हैं कि हम लोग केवल 50 लोगों का खाना बनाते हैं जी। तो आप पहले से आपने बुकिंग की है कि हमें वीकली पेमेंट करना है, नेक्स्ट वीक आपसे खाना लेंगे। तो इससे औरतों को बहुत उत्साह बढ़ा है। मैं ऐसा रियलाइज कर रही हूँ कि पेंडेमिक में भी औरतें खाली नहीं बैठी हैं, उन्होंने इस तरह की चीजें करके काफी, होममेड फूड चाहिए। अब जो बच्चे बाहर अकेले रह के काम कर रहे थे, उनको होममेड, तो होम टिफिन मंगाते हैं। होम टिफिन कहाँ से आता है, किसी न किसी औरत ने ही उसको किया हुआ, आदमी तो नहीं चला रहा है ना। आदमी बस ये करता है कि कोई बहुत छोटे लेवल पे कर रहा है तो वो स्कूटर से या मोटरसाइकिल से जाकर डिलीवरी कर देता है। तो ये सब एम्प्लॉयमेंट के नए जरिए पैदा होते हैं। जब प्रधानमंत्री ने कहा आपदा में अवसर खोजो, तो आपदा में औरतों ने अवसर खोजा है। मैं ऐसी बहुत सारी औरतों से बात करती हूँ जो अच्छी फैमिली से, हस्बैंड का काम धंधा बंद है, मगर उन्होंने घर से इस तरह से करके, मतलब एकदम अच्छे बॉक्स में अच्छी पैकेजिंग के साथ केक बनाकर भेज रहे हैं, या फेस्टिवल्स पे उन्होंने एक बास्केट बना दिया, और सारा उनका होम प्रोडक्शन है। तो उससे उनको काम तो मिल ही रहा है। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपका स्किल किस में है, और उससे आपको लोन चाहिए तो लोन मिल जाएगा आसानी से। आपको खुद अब जितने ये डिजिटल मीडियम्स हैं, जहां वाईफाई, हम लोग कितना महंगा होता था वाईफाई, जब हम लोगों ने पहली बार, आज से 22 साल पहले, ईमेल भी करना इतना दुश्वार था क्योंकि इंटरनेट की स्पीड बहुत कम थी। आज आप व्हाट्सएप पे इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हो, इंटरनेट है तभी तो। यस मैम। तो ये बहुत सारे डिजिटल मीडियम्स हैं जिसके थ्रू, फेसबुक के थ्रू लोग बिजनेस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं। तो इंटरनेट की क्वालिटी इंडिया में पहले बहुत पुअर थी, बहुत स्पीड नहीं थी। अभी एक और चीज हुआ है, दो और चीजें मैं कवर कर देती हूँ, तुमसे बात करके ही मुझे याद है, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है ना, नई चीजें दिमाग में आती है कि अच्छा ये भी नहीं बताया। तो एक चीज ये हुई है कि हमारा एक जो एयर इंडिया था, उससे हमें बहुत लॉसेस हुए हैं, इतने लॉसेस हुए हैं। तो उसका एक रिजर्व करके कि हम कैसे, भारत उसको भरेगा, तो वो लॉसेस को कैसे इस बजट में एडजस्ट किया जाएगा, वो उसको किया गया। प्लस हमने उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया, और डिसइन्वेस्ट करके टाटास को दिया है, तो वो लोग, उनके लिए वो एक इमोशनल इशू है, क्योंकि हमने उन्हीं से लिया था, टेक ओवर किया था गवर्नमेंट ने, तो वो उसको रिवाइव करके फिर वैसे ही कर देंगे। तो जहां पे जो बिजनेस गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का काम नहीं है एयरप्लेन चलाना,
हमें ये देखना है कि हमारे पूरे कंट्री में नेशनल हाईवे हो, ट्रेन्स हो, ये हो, उसमें भी रेलवे में भी पहले क्या होता था, एक रेलवे का बजट अलग आता था, शाम को 5 बजे वो लोग जो ब्रिटिश तय करके गए थे हम उसी को करते जा रहे थे। अब इंडिया का एक बजट होता है, यूनियन बजट में ही रेलवे इनकॉर्पोरेटेड है। रेलवे इतना अच्छा कर रहा है, अभी 400 न्यू ट्रेन चलने वाली है वंदे भारत, जिससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बहुत इजी हो जाएगी। फास्ट, सुपर फास्ट ट्रेन हैं ये, जो आपको कम समय में वहां पहुंचा देंगे। नेशनल हाईवेज जो डेवलप हो रही है उससे क्या होगा, अब एक एग्जांपल ले लो, जम्मू, यहाँ से जम्मू जाने में, दिल्ली से जाने में ओवरनाइट जर्नी होती है, 8-10 घंटे की जर्नी तो मिनिमम हो जाती है, वो 2.5, 3, 4, 5 घंटे में रिड्यूस हो जाएगी। तो फिर बहुत सारी कंट्रीज बाहर से पैसा अब कश्मीर में लगा रही हैं, जम्मू कश्मीर में। सऊदी अरेबिया सोच सकते हो कि वहां पैसा लगाएगा, अपने प्रोजेक्ट्स लाएगा, इसलिए ला रहा है कि उनको बिजनेस दिखाई पड़ रहा है। इंडिया अगर हम इतना लड़ाई झगड़ा ना करें, रोज ये हिजाब और ये और तिलक और ये सब करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें, तो शायद हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो बीच बीच के हंगामे बंद हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारी राइवलरी क्या, हमारे दो ऐसे दुश्मन नेबर्स बैठे हैं जो हमें चैन से रहने देते थे। इसलिए डिफेंस में भी हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है। ड्रोन से क्या नहीं हो सकता, मान लो यहाँ से ड्रोन से तुम्हें 200 किलोमीटर जाना है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप अपने घर से भी जा सकते हो। यस मैम, है ना, और नियरेस्ट पॉइंट पे छोड़ देगा ड्रोन, वहां से कोई लोकल कन्वेंस लेके आप जा सकते हो। कितनी बड़ी बात, 5G आ जाएगा इस ईयर। 5G के आने से आप मेटावर्स के बारे में सुना है? मेटावर्स जो होगा उसमें क्या होगा, तुम्हें वर्चुअली लगेगा कि तुम डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे हो, डॉक्टर से बात कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड में होने लगेंगी। 5G के आने से वो स्पीड अप हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ऐसे यूज करेंगे जैसे आपको लगेगा कि आप मेरे घर में बैठ के मेरे से बात कर रहे हो, है ना। आप डॉक्टर से बात करने का सेटिस्फेक्शन आपको घर से मिलेगा, आपको डॉक्टर के क्लिनिक पे। टेली कंसल्टिंग तो पेंडेमिक में ही आया ना। यस मैम, ये आपदा में ही तो नया अवसर निकला ना। अब एक डॉक्टर जो इतने सारे लोगों को दूर से जाके देखता था, हॉस्पिटल जाने आने में टाइम वेस्ट करता था, उसको तो क्लिनिक से डायरेक्ट काम कर रहा है। सो उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है जो हमारे जीवन में धीरे धीरे आ गए, हमें पता भी नहीं चला है। वी हैव नॉट रियलाइज कि हमने ये चेंजेस देख लिए हैं। क्या अगर जूम नहीं होता, जूम वैसे चाइनीज ऐप है, पता नहीं इंडिया अपना कब इस तरह से दे, लेकिन मगर और गूगल मीट से भी हम करते हैं वो मीटिंग से, पर ऐसा अपने इंडिया को भी धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा, सो दैट हम अपने उसको बिजनेस दें, जूम को ना दें। पर जूम के कारण पेंडेमिक में सारा काम हो ही रहा है ना। यस मैम, फेस टू फेस हम काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ये बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री जो हैं और जो हमारी इस समय की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो टेक्निकली बहुत सुपीरियर क्वालिटी का ब्रेन रख रही है। वो उन चीजों को, सारी चीजों को यूज कर रही है। वर्चुअल इलेक्शन कैंपेन्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तो जिससे आप पेंडेमिक को ध्यान में रख के उस तरीके से कर रहे हो कि आप वर्चुअली, और मेटावर्स में होगा तो लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर वहीं आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो जाएगा कि इतने फिजिकल नाउ वी हैव रियलाइज कि हमें रोज ऑफिस जाने की, अभी आप रिसेंटली एक नया डेवलपमेंट आने वाला 4 days a week where you will have 3 free days। आपको 48 hours काम करना है। अगर आप 12 घंटे एक दिन में कर लेते हैं तो 4 दिन के बाद 3 दिन आपका फ्री है। आप एक सेकेंड एम्प्लॉयमेंट अपना कोई करना चाहते हैं, कोई और काम करना चाहते हैं तो कर सकेंगे। ये सारी चीजें हैं आर्टिफिशियल। जैसे जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स, हमारे औरतों को के हेल्थ हमारा बहुत बड़ा इशू है इस कंट्री में। अगर 2 चीजें हमने शुरू से ठीक रखी होती कि हेल्थ की क्वालिटी अच्छी होती, दूसरी एजुकेशन हमारा सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हमें ले जाता, रट के पास होने की नहीं, हमें अपना ब्रेन यूज करने की ताकत आती, तो वो एक हम अलग तरह के हमारे क्वालिटी सिटीजन्स बनते हैं। रट के हम फर्स्ट आ जाते हैं, पर अगर कोई प्रैक्टिकल काम करना हो तो हमसे नहीं होता। वो एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हुई है नेक्स्ट 10 years में, देखना उससे कितना फायदा होगा। तो ये सारी चीजें बजट से ही तो आई है ना। उस एजुकेशन पे हमने अपना पैसा बढ़ाया है, हेल्थ पे बढ़ाया, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। इंडिया में तो मेंटल हेल्थ की बात भी नहीं होती थी। कि हम सब मेंटल हेल्थ मतलब आदमी पागल है, डिप्रेशन में चला गया तो पागल हो गया। ये एक जो स्टिग्मा था वो हट जाएगा, क्योंकि अब तो नेशनल मेंटल हेल्थ
पॉलिसी बनाई गई है इस बार इस चीज को ध्यान के, तो हमें समय के साथ भी तो चलना है। बजट वही अच्छा होगा जो प्रोग्रेसिव बजट है, जिसमें हम समय के साथ चल रहे हैं। सबसे बड़ा उसका एग्जांपल डिजिटल रूपी है, डिजिटल यूनिवर्सिटी है, डिजिटल एसेट्स हैं, जिसको हम वर्ल्ड लेवल पे ले आए कि हम भी मानते हैं, चलो मान लेंगे, इसको लीगल कर देते हैं, इस पर हम पैसा लेंगे, टैक्स लेंगे। तो बहुत क्विक डिसीजन हुआ, किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी। लगा था एक पॉलिसी आएगी जिसमें हम इसको रिकॉग्नाइज कर देंगे कि हाँ बिटकॉइन भी एक वर्चुअल करेंसी को हम लीगल मानते हैं, पर उसको टैक्सेशन तक ले जाना, डिजिटल रूपी अपना इंट्रोड्यूस करना, मेजर चेंज है। हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है, इस तरह की चीजें हैं। मैम एक और क्वेश्चन था, लाइक अभी जो ये पैंडेमिक था इसमें काफी ज्यादा एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ा है, तो इसको रिकवरी करने का कुछ प्लान? रिकवरी करने का देखो, जब सबसे बड़ी बात है कि हमने अभी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों का कोई भी वैक्सीन नहीं बनाया है, हम उसका रिस्क नहीं ले सकते। इतने छोटे बच्चों को अगर हम स्कूल भेज दें, और वो तो बच्चे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो सबसे पहले वो जिंदा रहे और हेल्दी रहे। तो इसलिए फेजेस में स्कूल्स खोले जाएंगे। और अब तो टीनेजर्स के लिए आ ही गया है वैक्सीन, और अब टीनेजर्स ले रहे हैं, धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं। हमें ये मान के चलना है कि ये पेंडेमिक थोड़ा या ज्यादा करके अभी 1 साल तक, मान लो हम मान के चलते हैं कि 22 में पूरा चलेगा, 22 में पूरा चलेगा, अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, आने वाले 10 महीने में अगर हम अपने टीनेजर्स को वैक्सीनेटेड कर देते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि उनके लिए कोई ऐसी, बच्चों के लिए तो वो इस हाई डोज ऑफ वैक्सीन नहीं हो सकता, ऐसे उनके लिए वैक्सीन बनाई जा रही होगी, जरूर उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इस तरीके से जो चीजें होंगी तभी हम उनको करें। बच्चे तो बहुत उदास हो गए, बच्चे क्या, अगर आप भी 2 साल से घर में बंद हो, मैं ही इतना ट्रेवल करती थी, इफ आई कैन नॉट ट्रेवल, तो कभी कभी ऊब होती है, बोर फील होता है, लगता है, बिकॉज ह्यूमन नीड है बात करने की जन। तो ये तो कहो कि इंटरनेट है तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। सबसे ज्यादा हमें यूजफुल तो ये लगता है जूम, जिसमें मैंने जितनी पोइट्री रीडिंग मेरी पहले नहीं होती थी, आई एम ऑल्सो अ पोएट, तो मैं पोइट्री पढ़ पाती हूँ। तो ये जो टेक्निकल गैजेट्स हैं, हाउ टू मेक ऑप्टिमम यूज, केवल हम और आप यूज नहीं कर सके। गांव में बैठा हुआ किसान पोल के पास, तुमने जानते हो, पता है एक पोल है, लगा दिया गया है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारा कुछ वो कनेक्ट वो किया हुआ है। आपके पास ऐप है, आप जाइए पूछिए कि हमारे पौधे के लिए इस वाले उसको सीजन में हम ये कौन सा फसल उगाएं, उसमें कौन सी खाद पड़ेगी, उसमें हमको कितना पानी डालना पड़ेगा, तो आपको किसी से पूछने नहीं जाना, वो बता देगा सब कुछ। और वो जो ड्रोन है उससे अगर स्प्रे हो जाए तो एक आदमी जो मैनुअली उसको कर रहा है और गलत भी कर देगा, मैनुअल एरर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन यूज करके। और वैसे ड्रोन से अगर आपको यहाँ से मेरठ भी रोज जाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक जैम नहीं होगा, कंजेशन नहीं होगा, इट विल सेव टाइम। तो हर तरीके से लाइफ बेटर ही होगी अगर हम टेक्निकल चीजों से, जैसे हमारे जनरेशन में जो 60+ है, उनको कई बार प्रॉब्लम शुरू में लगी कि कैसे हम ये सब करें, तो सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। गवर्नमेंट तो यूज कर ही रही है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 100% फेसलेस है, सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ भी आपका वैसे करने की जरूरत। पर अभी जो मेजर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो पोर्टल्स ही, कभी उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको ठीक करेंगे। शुरुआत हो चुकी है। हमें नल वाली बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ। तो अगर औरत फ्री हो जाएगी, वो कम समय में पानी लाने नहीं जाएगी, तो अपने बच्चे पे ध्यान देगी ना, उस तरीके से देखो। तो और बच्चे वहीं से बैठे बैठे, छोटी छोटी जगहों से बैठे बैठे अपना काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है। सो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट तो पेंडेमिक में ही आया है ना। तो ऑफिस में बिजली नहीं खर्च हो रही है, वर्किंग स्पेसेस रिड्यूस हो गए हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। हमें इसके साथ ही रहना भी है और इसी में नए तरीके से एम्प्लॉयमेंट खोजना पड़ेगा। यस मैम, सिचुएशन के साथ चेंज होना पड़ता है। हाँ, 2 साल में काफी चेंजेस हो ही गए हैं, सारी चीजें बहुत ज्यादा चीजें चेंज। हाँ, तो अब हम लोग इसीलिए इन सारी चीजों कि हमें अपना सिलेबस वो पढ़ाना चाहिए ना, जिससे किसान का बेटा यहाँ से पढ़ के जाए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो अपने गांव में जाकर उसको इम्प्लीमेंट कर सके ना। यस मैम,
हमें हमारी गवर्नमेंट सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में भी बात करती है कि कैसे कंपोस्ट खाद बनाए। सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हमारे पास वो था तो उससे तो ऑर्गेनिक खेती होगी कि आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर से होगी, वो सिलेबस में डाला जाए, उस तरह की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हमें ऐसा कर देना है कि किसी आदमी को गांव से शहर आने की जरूरत नहीं, वो वहीं पर अपना कर सके सारा काम। एक इक्वल स्टैंडर्ड हो कि it should not make a difference whether you are in Delhi or in Meerut or in Aligarh or in a remote village. Everybody should have the basic amenities. पानी गांव के एक छोटे कोने में भी आना ही चाहिए, घर में ही आना चाहिए। यस मैम। इंटरनेट के थ्रू तो काफी ज्यादा हमें पता भी चल रहा है कहाँ पे क्या ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। हाँ, लोग ट्विटर पे जाके बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है। यस मैम, काफी इजी हो चुका है क्योंकि पहले सुना नहीं जाता था उनकी प्रॉब्लम्स, अभी बड़े ऑफिसर्स के पास पहुंच नहीं पाती थी। अभी गवर्नमेंट ने इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया, हर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ऑल फोन नंबर्स, ऑल ईमेल एड्रेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो बजट इस बार का मुझे इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि हम डिफेंस में हमारी डिपेंडेंस, दूसरे हम क्या हर समय भीख ही मांगते रहे यूएसएसआर से या फ्रांस से कि हमें ये दे दो, ये सैटेलाइट से, ये वो सारी चीजें। सैटेलाइट से भी हम अपने वेदर, सैटेलाइट का काम केवल दूसरे के ऊपर जासूसी करना नहीं है। अगर हम अपनी वेदर की एक्यूरेसी ले लेंगे तो ही हम बहुत इंप्रूव कर लेंगे। जहां हमें पता चल जाए 3 दिन पहले ही कि या 10 दिन पहले कि यहाँ फ्लड आ सकता है, यहाँ साइक्लोन आ सकता है, वहां के लोगों की जान तो बचा सकते हैं। उनको अब बहुत तेजी, अब कहाँ इस तरह की चीजें नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो ये तो अभी इंडिया उस मामले में भी बहुत आगे बढ़ी, मार्स पे चली गए। उसके बाद सैटेलाइट से रोज ही कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। साइंस को के एक्सपेरिमेंट्स पे, रिसर्च पे जितना ज्यादा हम क्वालिटी डालेंगे उतना ही हमारा बेटर। यस मैम। तो उसके लिए फंड्स हैं, उसके लिए एनकरेजमेंट है, उसके लिए अब जैसे जेएनयू जैसा यूनिवर्सिटी जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट को लेके स्किल इंक्यूबेटर्स बन गए हैं, वहां पे मैनेजमेंट कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, मेडिकल आ रहा है। तो हमारे बच्चे अभी, अब एक छोटा सा एग्जांपल आप लीजिए कि यूक्रेन में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं। छोटा सा यूक्रेन, एक कोई इतना बड़ा तो नहीं। अगर हमारे देश में इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस खुद होते तो ये 30,000 बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाते ना। वो पैसा यहाँ खर्च होता ना, यहाँ आता ना। हमारे देश में लोगों को टीचिंग मिलती, स्टूडेंट्स मिलते, यूनिवर्सिटी का कैंपस होता, पता नहीं कितने लोगों को काम मिलता। वो मेडिकल कॉलेजेस यहाँ होने चाहिए थे। 30,000 बच्चे हमारे यूक्रेन जैसे फालतू जगह में जाके बैठे हुए हैं। इंडिया में ये गवर्नमेंट के आने के बाद हर स्टेट में एम्स बन रहा है ना, एम्स बन रहा है ताकि हमें दौड़ के दिल्ली ना आना पड़े। मेडिकल फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट आए, एजुकेशन फैसिलिटीज। हम इतना, हमारे बच्चे जाके यूएस में क्यों पढ़ रहे हैं, कौन वो ज्यादा अच्छा पढ़ा दे। यहाँ पे अगर उनकी एडमिशंस नहीं हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो अमीर के साथ अमीरों के बच्चे वहां जाके पढ़ रहे हैं और बहुत फीस दे रहे हैं। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन बहुत चीप है। लॉ वगैरह तो 20-25 हजार में आप 3 साल पढ़ के निकल गए। तो ये सारी चीजें हमें ज्यादा यूनिवर्सिटीज, ज्यादा वो सब चीजें बनानी पड़ेंगी। जिसको ओपन ही स्कीम रखा है कि आप पढ़ के यहाँ पे आपको जॉब की जरूरत है, आप चले जाओ, 2 साल बाद वापस आके उस कोर्स को कंप्लीट कर लो। ये सारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में जो आई हैं, जो आ गई हैं, उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा। चलो, जो 20-22 मिनट मैंने शुरू में बोल नहीं पाए, मुझे, हम ठीक 5 बजे आ गए थे, बट देन हो जाता है, कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है। नहीं, हमें, मेरे अंदर एक पंक्चुअल पर्सन रहता है, डिसिप्लिन में, और एक सिविल सर्वेंट होने की वजह से हम ठीक 5 बजे लॉग इन कर चुके हैं। थोड़ा इरिटेट हो गए। वो इरिटेट इसलिए मुझे लगा कि जो भी हमें बोलना है वो एटलीस्ट अभी लोग नहीं सुन रहे होंगे तो बाद में इसका वीडियो तो देखेंगे ना। हाँ, तो वो टाइम चलो मैंने कंपनसेट कर दिया, बिकॉज मुझे लग रहा था कि 20-22 मिनट हमारा लेट स्टार्ट हुआ है। अगर किसी ने चैट में कोई भी क्वेश्चन पूछना है या आपको और भी कुछ पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। बजट सबको बहुत बोरिंग लगता है एक्चुअली, कोई क्वेश्चन ही काफी अच्छे से समझ में आया चीजें। हाँ, काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट, मुझे जिस भी टॉपिक पे बोलना होता है, इंडियन बजट तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैं रेवेन्यू सर्विसेज की ऑफिसर रही हूँ और 40 साल उसमें लगाए हैं। पर अदरवाइज भी मैं
अपने आप को, अब मैं क्लास क्यों लेती हूँ, ये वो लेक्चर क्यों मान जाती हूँ कि मैं दे दूंगी किसी भी टॉपिक पे, इसी बहाने मैं अपने को अपडेट कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि अब बजट के बारे में मैंने एक एक चैप्टर इतनी अच्छे से देखा है कि किस सेक्टर में आंगनवाड़ी का वर्कर क्या करेगा, उसकी वैल्यू एडिशन कैसे होगी, और नल में पानी कैसे घर घर में पहुंचा जाएगा। इस तरीके से बजट के एनालिसिस कोई नहीं करेगा, वो आपको मोटा मोटा सब कुछ बता देगा कि इसमें इतना पैसा, वो तो सब लोग पढ़ लेंगे कि इसमें बजट एनहेंस हुआ है, पर ये नहीं बता पाएंगे कि उसका कैस्केडिंग इफेक्ट, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। यस मैम। परिवर्तन तो तब होगा जब हमारे घर में पानी आ रहा होगा, हमारे घर की औरत 2-4-5 किलोमीटर दूर से पानी भर के घड़े में नहीं आएगी, तो वो उतना टाइम उसका बचेगा, तो वो अपने बच्चे की हेल्थ पर, अपने हेल्थ पर ध्यान दे। आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है कि हेल्थ एंड हाइजीन सिखाओ इन औरतों को, इनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, है ना। तो ये, और टेली कंसल्टेशन से डॉक्टर्स घर में बैठे भी आपको, आप किसी भी गांव में बैठे हो, इंटरनेट होना चाहिए, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो, आपको अपना पेशेंट लेके इधर भाग के आना नहीं पड़ेगा। यस मैम, थैंक यू मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। पर जो हमारे जो लेक्चर सुनने के लिए लोग थे, उनके क्वेश्चंस नहीं थे। एनीवे, तुम आप ही के जनरेशन के लोग होंगे तो यही सब क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे ख्याल से। यस मैम, थैंक यू मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। आई होप दैट बजट इतना बोरिंग लोगों को ना लगे। मैंने इसीलिए उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ताकि हम उसमें इंटरेस्ट ले सके हमारे देश में क्या हो रहा है। यूनियन बजट, लोग सोचते हैं हमसे क्या मतलब, मगर मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा, हर इंडियन सिटीजन, उसका हक भी है जानने का, समझने का कि हमारे देश में हो क्या रहा है, क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम ये सोचे कि सबको नौकरी मिल जाए एक दिन में, तो ये नहीं होगा, मगर अगर हम आपको इस लायक बना दें कि आप खुद भी कुछ कर सकें, ये है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कितने लोग को जॉब दे सकती है, ये है, वे बता सकती है, अपॉर्चुनिटीज निकाल सकती है, वर्क हमें करना है उस पर, हमें किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, हम उसको अपने लिए कैसे पॉजिटिव। आपको हम ये सिखा देंगे कि अपने ब्रेन को कैसे यूज करो, और तुम खुद सोचो कि तुम क्या सबसे अच्छा कर सकते हो, उसके लिए आओ, स्कीम बताओ, लोन लो, जाओ करो। यस मैम, काफी इजी हो चुका है लोन, ये सारी चीजें पहले से गवर्नमेंट काफी इजी कर दी है। एंटरप्रेन्योर्स की लोन्स इजी हैं, औरतों को तो और दौड़ के हम देते हैं। एमएसएमई सेक्टर में सारी औरतें ही आती हैं। अभी मैं ज्यूरी में थी उनके किसी प्रोग्राम में, तो आई सॉ दैट, मुझे 100 एशियन वुमेन को चुनना था, उसमें से कुछ लोगों को अवार्ड देना था, तो मैंने देखा कि एमएसएमई सेक्टर केवल औरतों के लिए नहीं है, मगर मैक्सिमम औरतें हैं स्मॉल इंडस्ट्री में और मीडियम स्केल इंडस्ट्री में। So thank you ma'am, and again so sorry ma'am, चलो, अब ये टेक्निकल चीजें होती हैं, इसमें बस एक ही लेसन है कि हमारा लेक्चर है तो हम 10 मिनट पहले ही उसको सेट कर लें, ताकि कोई ग्लिचेस हो तो, जैसे हम भी अपने और भी लेक्चर होते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत सीजन, आपको पता है, मगर जो टेक्निकल टीम है उनको 5-10 मिनट पहले स्टार्ट करने से क्या होगा, कोई चीज गड़बड़ हो रही है आप फोन करके पूछ लो कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, आप ये कर लीजिए, या अनम्यूट कर लीजिए, या ये इसको इस पॉइंट को दबा लीजिए, तो उससे ठीक हो जाता है। ठीक है, ये अच्छा हुआ कि मतलब बोलने से अब आप हम लोग सब एक दूसरे से सीखते हैं। ये नहीं कि मैंने आपसे नहीं सीखा, मगर मुझे ये पता था कि जरीन देख रही होगी, तो वो हमने तो ठीक 5 बजे लॉग इन कर लिया। एनीवे, जो हुआ सो हुआ, बट वी हैव कंपनसेटेड, हमने जो हमारा टाइम शेड्यूल था उसमें हो ही गया, आपके क्वेश्चंस भी हो गए, एंड चलो, आई एम हैप्पी। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू मैम। बजट में इंटरेस्ट आया ना? यस मैम, काफी इंटरेस्ट आया, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप मैं करवाना चाहती हूँ, उसके बाद तो वो खुद पढ़ लेंगे। यस मैम, खुद देख लेंगे जो उनको चाहिए। ठीक है, ओके, राइट, ओके, थैंक यू, सो आई लीव द मीटिंग। यस, ओके, ओके, बाय।